Myself Priya Satish Pandit from 10th English Medium Vasan branch. First of all, I would like to thank the team of the Real Academy to give us such an opportunity to express my ideas, thoughts about regarding this project. So basically my project is based upon totally the night and day working model. Now in this whole process, we get to know that how night and day occurs, how it happens. सो इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमें डे और नाइट यानी दिन और रात कैसे होता है इस पूरे प्रोसेस के बारे में पता चलता है. नाउ जस्ट एज वी ऑल नो दैट अर्थ रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. इट रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ. इट टेक्स 24 hours to complete the one rotation, and that means one day, and moon rotates around the earth. Now let's see how this model works. Now here I attach this. So Earth completes its one rotation and when it stops, so अब ये जो सूरज की किरणें हैं ये अर्थ के इस भाग में पड़ती है, यानी कि ये जो अर्थ का हाफ पोर्शन है, it faces the sunlight rays and the portion which faces the sunlight rays it having the day. मतलब इस भाग में जितने भी क्षेत्र होते हैं जैसे कि भारत, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, they all have day. और इसके विपरीत इस भाग्य में सूरज की किरणें नहीं पड़ती. तो जो ये भाग्य है, यहाँ पे जो क्षेत्र हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वी कैन से कनाडा, यहाँ पे नाइट होता है और यहाँ पे दिन. जैसे कि हमें पता है सूरज जब उगता है, व्हेन सन राइज इट राइज फ्रॉम ईस्ट एंड इट सेट्स फ्रॉम वेस्ट. सो ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट. तो जो व्हेन सन इज देयर एंड व्हेन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इट रोटेट्स इटसेल्फ. सो जब रिवॉल्यूशन होता है और व्हेन इट्स रोटेट, तो जो ये हमारा सन है, the portion of the sun it faces the lights or it throws some substrates of lights on the portion of half portion of the earth, and that half portion have the day, and on the other portion where light doesn't face, that portion is a day. Now this is all about how day and night works. For extra knowledge I have made this chart. You can observe here 20 countries names I have wrote which tells us about the difference of time from India in the comparison of them. Like Australia is 5 hours 30 minutes ahead than India, and India is 10 hours 30 minutes ahead than Canada. We can see that Sri Lanka and India doesn't have any time difference. So it is all about here 20 countries names are there. Now we will observe this chart. In this chart we come to know the revolution of orbital of Earth around the sun. Now we can see that here some lines are passing. That lines are known as axis, which is an imaginary. ये काल्पनिक रेखा है, ये असल में होती नहीं. और यहाँ पे ये जो रेखा है ये 23.5 डिग्री पे स्लैंट रहती है, झुकी हुई रहती है. अब जैसे कि हमें पता है गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और ठंडियों में छोटे, तो वैसे ही जून 21 समर it is the biggest day we declared, and March 21 here day is not much bigger or not much small. We can say it is the middle ones. And in December 22 winter it is the smallest day we can say. And the axis it passes from North Pole to South Pole between the middle of the earth. As I said, it is an imaginary axis which passes from the earth. So this chart tells us about the orbital revolution around the sun. So this all the project what I have made, it is based on the how day and night works. Thank you.